बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कम उम्र बच्चों की शादियों के से मुतल्लिक कानून, जो कि चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 के नाम से जाना जाता है। हाल ही में फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई, जिसमें सेक्शन 4, 5 और 6 ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को चैलेंज किया गया था। इससे पहले कि हम इसके डिटेल में जाएं, मैं चाहूँगा कि चाइल्ड मैरिज होती क्या है, इसकी क्या तारीफ बयान की गई है चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 में, और इस कानून के तहत चाइल्ड से क्या मुराद है। इसका सेक्शन 2E जो है, उसमें कहा गया चाइल्ड मीन्स अ पर्सन हु इफ अ मेल इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज एंड इफ अ फीमेल इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज। यानी अगर तो लड़का है तो उसकी वो शख्स जिसकी एज 18 साल से कम है, और अगर लड़की है तो जिसकी उम्र 16 साल से कम है, वो चाइल्ड के ज़मरे में आती है। चाइल्ड मैरिज क्या है? चाइल्ड मैरिज मीन्स अ मैरिज टू विच आइदर ऑफ द कंट्रैक्टिंग पार्टीज इज अ चाइल्ड। यानी चाइल्ड मैरिज से मुराद कि दोनों मेल या फीमेल या दोनों में से कोई भी एक चाइल्ड की डेफिनेशन में आता है तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। चाइल्ड मैरिज की सज़ा भी बयान की गई है, जिसमें सेक्शन 4 को अगर देखा जाए तो उसमें लिखा है कि पनिशमेंट फॉर मेल अडल्ट अबव 18 ईयर्स ऑफ एज मैरिंग अ चाइल्ड, whoever being a male above 18 years of age contracts child marriage shall be punished with imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। यानी अगर ऐसा शख्स जो 18 साल से उम्र जिसकी ज़्यादा है और किसी चाइल्ड यानी किसी कम उम्र बच्चे से शादी करता है, तो उसको 1 माह की सज़ा जो कि विद फाइन होगी, और फाइन 1000 रुपये तक हो सकता है, या दोनों ये सज़ाएँ उसको दी जा सकती हैं। सेक्शन 5 है पनिशमेंट फॉर सोलमनाइजिंग अ चाइल्ड मैरिज। Whoever performs, conduct or directs any child marriage shall be punishable with simple imprisonment which may extend to 1 month or may extend to rupees 1000 or with both, unless he proves that he had reason to believe that marriage was not a child marriage। इसी का सेक्शन 6 है, वो है वालिदैन और गार्डियन जो कि किसी भी तरह से कंसर्न है चाइल्ड मैरिज में, उनकी सज़ा के बारे में जिक्र है। इसमें कहा गया है पनिशमेंट फॉर पेरेंट्स और गार्डियन कंसर्न्ड इन अ चाइल्ड मैरिज। वेयर अ माइनर कंट्रैक्ट्स अ चाइल्ड मैरिज, एनी पर्सन हैविंग चार्ज ऑफ द माइनर वेदर एज पेरेंट्स और गार्डियन और एनी अदर कैपेसिटी lawful or unlawful, who does any act to promote the marriage or permits it to be solemnized or negligently fails to prevent it from being solemnized shall be punishable with simple imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। यानी चाइल्ड मैरिज में वालिदैन या गार्डियन या और शख्स जो कि किसी भी कैपेसिटी में, चाहे वो लॉफुल हो चाहे अनलॉफुल हो, कोई रोल प्ले करता है या उस शादी को रोकने में अपना किरदार अदा नहीं करता, तो उसको 1 माह की सज़ा या 1000 रुपये जुर्माना, 1000 रुपये तक जुर्माना, या दोनों सज़ाएँ हो सकती हैं। ये जो पिटीशन फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल की गई है, और इसमें सेक्शन 4, 5 और 6 ऑफ चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929 को चैलेंज किया गया है। इसमें पिटिशनर की तरफ से जो मेजर ग्राउंड ली गई है वो ये है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी मुबारक 6 बरस की उम्र में हुई और 9 बरस की उम्र में उनकी रुखसती हुई। इस एग्जाम्पल को ऑनरेबल फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि इस्लाम ने 2 प्रिंसिपल सेट कर दिए हैं। नंबर 1 कि नाबालिग बच्ची का निकाह उसके वली की इजाज़त से हो सकता है, ताहम the marriage has to be consummated after the girl attains the adulthood or adult age। फेडरल स्टेट कोर्ट ने मजीद ये कहा कि देयर आर सर्टन एक्ट्स
which are specifically associated with the personality of Nabi Kareem Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, like Farziyat Namaz Tahajjud and solemnization of marriage contract with the Ummahatul Mu'mineen Razilullah Ta'ala Anha on the direction of Almighty Allah, etc. The Nikah of Hazrat Aisha with Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam is one of them. یعنی کچھ ایسے ایکٹس ہیں جو کہ صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ایسوسیٹڈ ہیں، جیسے نماز تہجد کی فرضیت یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امہات المومنین سے نکاح، جو کہ آن دی ڈائریکشن آف المائٹی اللہ پرفارم کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں آنریبل فیڈرل اسٹیٹ کورٹ نے جو ریفرنس دیا ہے وہ ہے تفسیر القرآن از مفتی محمد شفیع، معارف القرآن سورہ الاحزاب آیت نمبر 50 to 52۔ فیڈرل اسٹیٹ کورٹ نے مزید یہ کہا ہے کہ وہ بچی یا وہ خاتون جس کا کم عمری میں نکاح اس کے ولی یا اس کے گارڈین کی اجازت کے تحت کیا گیا تھا، اگر وہ چاہے تو آن اٹیننگ دی ایج آف پیوبرٹی وہ اس نکاح کو کینسل کر سکتی ہے، منسوخ کر سکتی ہے۔ بچی کے اس حق کو خیار البلوغ کا نام دیا گیا ہے، اور خیار البلوغ کے لیے جو نارمل ایج پاکستان میں فکس کی گئی ہے وہ 16 سال ہے۔ فیڈرل اسٹیٹ کورٹ نے اپنی اس ججمنٹ میں مزید یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی ایسا عمل جو سوسائٹی کے لیے کلیکٹیولی یا کسی مخصوص سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہو تو اسٹیٹ چاہے تو لوگوں کو اس سے منع کر سکتی ہے۔ اس سلسلے میں جو ایگزامپل کوٹ کی گئی ہے وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، ان کے عہد میں مسلمان مردوں کو اہل کتاب عورتوں سے شادی سے منع کر دیا گیا۔ حالانکہ شریعت میں یہ جائز تھی، لیکن سوسائٹی کو کیونکہ ڈیمیج کر رہی تھی چیزیں، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان مردوں کو اہل کتاب عورتوں سے نکاح سے منع کیا۔ اس سلسلے میں جو مزید ایک ایگزامپل کوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں میں یہ پریکٹس تھی کہ وہ ایک ہی گو میں اپنی وائف کو 3 times طلاق دے دیتے، تاہم بعد میں وہ کلیم کرتے کہ انہوں نے اس کو ایک ہی کاؤنٹ کیا اور اپنی خاتون کو واپس لے آتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پریکٹس کو ڈسکریج کرنے کے لیے حکم جاری فرمایا کہ آج کے بعد جو شخص ایک ہی گو میں 3 طلاقیں اپنی وائف کو دے گا تو وہ 3 ہی کنسیڈر ہوں گی اور وہ خاتون واپس نہیں آ سکے گی۔ It is further stated in this judgment that setting a threshold of minimum age of 16 years by law will generally help the girls to get at least basic education. The importance of education is self-explanatory. The need of education is equally important for everybody irrespective of gender. That is why Islam has made the acquisition of knowledge as mandatory for every Muslim, as mentioned in Hadith. It includes males and females both. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ Honorable Federal State Court further observed that for a healthy marriage, physical health and economic stability are necessary factors, but mental health and intellectual development is also very important, which are achievable only through education. Education is fundamental for women empowerment. At a personal level, for a girl or anybody, irrespective of the gender, the factor of getting education comes under the concept of hifz al-aql, that is, promotion and protection of intellect. In view of all these observations, the Honorable Federal State Court dismissed the petition in limine, wherein Section 4, 5, and 6 were challenged, with the prayer to declare the said sections in contradiction of the Islamic laws and rules. Thus, the Honorable Federal State Court came to the conclusion that Section 4, 5, and 6
of the Child Marriage Restraint Act 1929 were in accordance with the Islamic rules and laws. The minimum age fixed for marriage 16 years in case of female and 18 years in case of male is not against the Islamic laws and rules.